Hey guys, welcome back in this series. So we have discussed 15 questions in the previous video and now we will begin from question number 16. So let's begin. So here we have match list 1 with list 2. So negative capability was the term which was first used by romantic poet John Keats in 1817. Next, objective correlative. This term was coined by Washington Allston and was introduced by T.S. Eliot in 1919 in his essay Hamlet and His Problems. Hope you remember all this information. Next, imagism. Ezra Pound is the founder of this movement and T. Hume is also an important character of this movement. और एसन प्लास्टिक इमेजिनेशन को वर्ड को पहली बार एस.टी. कॉलरिज ने 1817 में अपनी वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में डिस्कस किया था. So here the correct answer is option 2. Next, question number 17. The first 5 books of the Bible are collectively known as dash. बाइबल के फर्स्ट 5 बुक को कलेक्टिवली टोरह के नाम से जानते हैं. इन हिब्रू एंड इन ग्रीक इट इज पेंटाचिस्ट. एंड द नेम्स ऑफ द 5 बुक्स जो कि इस कलेक्शन में आते हैं उनका नाम है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिसस, नंबर्स एंड ड्यूटरोनॉमी. Next question. In Thomas Gray's elegy written in a country churchyard, what does the speaker celebrate? So, elegy written in a country churchyard is a poem by 18th century English poet Thomas Gray, came in 1751. In this poem, the speaker celebrates the boost of heraldry and the pomp of power. Next, which of the following plays was written in blank verse? इनमें से किस प्ले को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है? राइट आंसर गॉर्बुडक. गॉर्बुडक जिसे कि हम फेरिक्स पोरेक्स भी कहते हैं, ये इंग्लिश की पहली ट्रेजेडी है. इट वॉज रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल. इसे पहली बार 1561 में परफॉर्म कराया गया था. एंड बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हमें इसके ऑप्शंस भी देखने चाहिए. सो द कास्टल ऑफ परसिवरेंस इज अ मोरालिटी प्ले रिटन इन मिडिल इंग्लिश. ये एक वर्नाकुलर प्ले है. गैमर गर्टन्स नीडल इज अ कॉमेडी केम इन 16th century. Ralph Royster Doyster is regarded as the first comedy in English language by Nicholas Udall. Next question. Which of the following is an allegorical poem celebrating the Tudor dynasty? इनमें से कौन सी allegorical poem Tudor dynasty को celebrate करती है? Prothelemeon is a poem by Edmund Spenser. ये poem एक wedding song की तरह मानी जाती है. Right answer of this question is The Fairy Queen. इट्स एन एपिक पोएम बाय एडमंड स्पेंसर. इसमें टोटल 6 बुक्स आते हैं. पहली बार 3 बुक्स के साथ 1590 में पब्लिश हुई. पहली बार 3 बुक्स के साथ 1590 में पब्लिश हुई. फिर 6 बुक्स के साथ 1596 में. ये बुक ट्यूडर डायनेस्टी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के रेन को सेलिब्रेट करती है. और एमेरिटी भी स्पेंसर का वर्क है. इसे सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है. Next question. Who called Sally a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain? Right answer of this question is Matthew Arnold. Next, which of the following is not a feature of Restoration comedy? The time period of Restoration age was 1660 to 1688. Restoration comedy was a genre which developed in this period only. Witty dialogue, satirical commentary, sexual intrigue means sex and seduction, focus on manners and morality were the main features of this age. And if you know, then comment when did the theatre returned in England? Right answer of this question is option 3. Middle class morality was the theme of Victorian age. Next question. Who defined poetry as the speaking picture? Here the correct answer is Sir Philip Sidney. Sidney ने अपने work An Apology for Poetry में poetry को as a speaking picture बताया है. Next question. What was the original working title that Virginia Woolf used for Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway is a work by modernist writer Virginia Woolf. Here the correct answer is option C. Next question. To which genre of writing does Milton's Lycidas belong? John Milton की work Lycidas इनमें से किस genre से belong करती है? तो ये एक pastoral elegy है. इसमें मिल्टन अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के डेथ का शोक मनाते हैं. ये 1637 में लिखी गई और 1638 में पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द नेम्स ऑफ द राइटर्स इन कॉलम ए विथ देयर पेन नेम्स इन कॉलम बी. पेन नेम इज एन important टॉपिक ऑफ योर एग्जाम. सो हियर मैरी एन एवंस गोज टू जॉर्ज इलियट, चार्ल्स डिकेंस गोज टू बॉज, एन ब्रॉन्टे गोज टू एक्टन बेल, एंड चार्ल्स लैम्ब्स पेन नेम वॉज इलिया. All the questions which I am bringing in this series are very, very important for exam. So stay calm, be positive and try to learn the questions right now only.
Next question, arrange the following poets according to their timelines. So here first Geoffrey Chaucer, then John Skeleton, and then Edmund Spenser, then Alexander Pope. So according to their birth, option 2 is correct. Next question, which is Charles Dickens' first novel? So the first novel of the Victorian age writer Charles Dickens came in 1836 and the name of the novel is Pickwick Papers. Next question, what would be the ascending sequence of the following text as per their year of publications? हमें इन वर्क्स को उनके पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में सजाना है. So the Fairy Queen came in 1590. The play Every Man in His Humour was published in 1598 and it was written by Ben Jonson. The lyrical ballad by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge came in 1798. Queen Mab in 1813. ये एक poem है by P.B. Shelley. Right answer is option 1. Next question. In which play does Forest of Arden figure? तो शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन देखने को मिलता है और ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है.